हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। प्रीमिक्स में हम 5 MCQs डिस्कस करते हैं और हर रोज़ हम सब्जेक्ट वाइज MCQs डिस्कस करते हैं। आज इन्वायरमेंट का दिन है, तो आज हम इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड स्टैटिक और करंट से 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वंस यू आर डन विद दिस वीडियो, अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट्स में लिख दीजिए और अपना स्कोर भी आउट ऑफ 5 प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए। सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, आपको ना 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है बेस्ड ऑन दी स्टेटमेंट्स कि आउट ऑफ दी ऑप्शंस में किस वेटलैंड की बात कर रही हूँ। सो बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई दी वेटलैंड। सिंपल क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट है, इट इज फेड बाय गंगा एंड सोलानी रिवर्स. It is located within the boundaries of Hastinapur Wildlife Sanctuary. It is an important stopover destination for winter migratory birds like the grey-lag goose and the bar-headed goose. Turtle Survival Alliance India is conducting a survey of river turtles here. तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं एंड लेटली इट हैज़ बीन इन न्यूज़। तो अगर आप न्यूज़ अच्छे से फॉलो करते हैं तो दिस क्वेश्चन शुड बी वेरी इजी फॉर यू। एनीवेज यू कैन पॉज द वीडियो हेयर एंड थोड़ा आप सोचिए कि क्या हो सकता है ऑप्शंस में से और अपना आंसर मार्क कीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज हैदरपुर वेटलैंड। अगर हम हैदरपुर वेटलैंड की बात करें, ये यूपी में है। इट इज़ इन मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट। और ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है यूपी का, दैट इज़ वर्किंग अलॉन्ग विद द कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि इसको भी एक रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया जाए, नोटिफाई कर दिया जाए। So it came into existence in 1984 after the construction of Madhya Ganga barrage. It is spread over 1214 hectares and it is located within the boundaries of Hastinapur Wildlife Sanctuary. सबसे important link मतलब वो था आपके लिए clue था। Many bird species inhabit this wetland and it is also an important stopover destination for winter migratory birds. और ये ना एक ऐसे strategic location पे located है on the banks of the Ganga where it meets the Solani, that is a small tributary. ठीक है। Now after the barrage was constructed, the spillover water of these two rivers formed the marshy land. ठीक है, तभी हमने ये बोला है कि मध्य गंगा बैरेज के कंस्ट्रक्ट होने के बाद भी एग्जिस्टेंस में आया, क्योंकि उसके बाद जो स्पिल ओवर वाटर था उसने ये मार्शी लैंड, ये वेटलैंड बनाया है। लेकिन इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट बर्ड हैबिटेट हो गया है कि वैसे ही रेजिडेंट बर्ड्स तो मिलते ही हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पे दे स्टॉप ओवर एंड इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड अंडर द नमामि गंगे एज अ मॉडल वेटलैंड अलॉन्ग द गंगा। ठीक है, सो डू रिमेंबर अबाउट हैदरपुर, डू रिमेंबर अबाउट दिस वेटलैंड। ठीक है, और ये जो इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट्स, ये ज़रूर एक बार देख लीजिए। Okay, moving on to the next question. The next question is regarding provisions of the Panchayats Extension to Scheduled Areas Act 1996 और PISA Act. आपको बताना है कौन सी statements correct है। It was enacted by the government to cover the scheduled areas which are not covered in the 73rd constitutional amendment. Is this correct? Then elected heads of the respective states are empowered to safeguard and preserve the traditions and customs of the people, their cultural identity, community resources and the customary mode ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो ये काफ़ी लंबा स्टेटमेंट है, तो इसमें हर एक जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है ना उस पर आपको ध्यान देना है कि उसमें कुछ गलती तो नहीं है। Right, again you can pause the video and you can mark your answer. The correct answer is one only, क्योंकि it was enacted to cover the scheduled areas which are not covered in 73rd constitutional amendment. This is correct, but यहाँ पे elected heads of respective state की जगह क्या आएगा? ग्राम सभा। ठीक है, okay. So Chhattisgarh government has recently started the process to frame the rules to implement the PESA Act. जब से ये पास हुआ है ना, 6 states ने rules बनाए हैं और कुछ states हैं they have yet to do so for implementation of act. ठीक है, तो इन states ने rules बना दिए हैं लेकिन इनके अभी pending है और छत्तीसगढ़ government recently started that. Now ये जो act है, it was enacted by government to cover the scheduled areas which are not covered under 73rd constitutional amendment and it extends the provisions of part 9 to the scheduled area of the country.
ठीक है. सो ये बेसिकली ग्राम सभा लेवल पे पावर लेकर आता है ये एक्ट जो है. ग्राम सभा इज इंटरेस्टेड विथ पावर्स रेंजिंग फ्रॉम कंसल्टेशन ऑन लैंड एक्विजिशन टू द ओनरशिप ओवर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड लीजिंग ऑफ माइनर मिनरल्स. ठीक है. और ग्राम सभा में कौन आते हैं? जितने भी अडल्ट हैं एक विलेज के, दे ऑल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द ग्राम सभा. ठीक है. एंड एवरी ग्राम सभा शिल बी competent टू safeguard and preserve the traditions and customs of the people, their cultural identity, community resources and the customary mode of dispute resolution. ठीक है. उसके बाद और जो पार्स हैं ग्राम सभा या पंचायत की वो क्या है? टू बी कंसल्टेड ऑन मैटर्स ऑफ लैंड एक्विजिशन एंड रीसेटलमेंट. ठीक है. Then grant prospecting license for minor, lease for minor minerals and concessions for such activities. Minor water bodies की planning और management. The power to enforce prohibition. The ownership of MFPs. The power to prevent alienation of land and to restore any lawfully alienated land of a scheduled tribe. The power to manage village markets. The power to exercise control over money lending to scheduled tribes. And while giving such wide-ranging powers to Gram Sabhas or Panchayats, Visa has further given an added responsibilities that to the states that they may endow Panchayats with powers and authorities as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government. तो ये states के ऊपर depend करता है. Then it also contains safeguards to ensure that panchayats at higher level do not assume the powers and authority of any panchayats at the lower level or the Gram Sabha. Right? So this is about Visa Act. Now moving on to the third question. It is according to the recent notification issued by the government of India, which of the following statements are incorrect? ठीक है. Health certification has been made mandatory for all milk and milk product exports. The rules were passed by Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. तो आपको बताना है कौन सी incorrect है. Right? So you can again mark your answers. Read the statement carefully again and mark your answers. आप pause कर सकते हैं, mark कर सकते हैं और फिर भी वीडियो को resume कीजिए. Anyways, the correct answer here is B only because it is incorrect, right? So, India under the Export of Milk and Milk Products Quality Control Inspection and Monitoring Rules 2020 has made health certification mandatory for all the milk and milk product exports. ठीक है, it will be subject to stringent quality control inspection and monitoring. And the products which do not comply with the standards will be prohibited as per the rules notified by the Commerce and Industry Ministry. So that is why the second statement is not correct. ठीक है. और अगर हम बात करें बेसिकली जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया है एक स्टैंडिंग कमेटी अंडर चेयरमैन EIC एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल टू फॉर्मुलेट स्टैंडर्ड्स फॉर विच नन वर अवेलेबल. ठीक है. उसके बाद रूल्स में क्या है कि कंसाइनमेंट टू बी अकम्पनीड बाय अ सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपोर्ट वर्दिनेस, जो ये सर्टिफिकेट है इट विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. It would also issue the health certificate that such consignment is fit for human consumption and export worthy, और veterinary certificate अगर importing country का कोई rule है तो वो वेटनरी सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे. ठीक है. सो एक्सपोर्ट वर्दीनेस का सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट एंड वेटनरी सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड. ठीक है. अब ऑर्डर ऑल्सो डिटेल्स वेरियस हाइजीन रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल कंडीशंस रिलेटिंग टू होल्डिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रॉ मिल्क एट ट्रीटमेंट एंड प्रोसेसिंग इस्टेब्लिशमेंट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. और EIC ने ऑल्सो इंश्योर किया है कि कोई भी रेजिड्यू नहीं होगा सब्सटेंसेस का, नहीं होना चाहिए जिसका कोई फार्माकोलॉजिकल या हार्मोनल एक्शन हो या एंटीबायोटिक्स हो या पेस्टिसाइड्स हो इन एक्सेस ऑफ द परमिटेड लेवल्स फिक्स्ड. ठीक है. क्योंकि अगर उससे ज़्यादा होंगे तो इट माइट मेक द कंजम्पशन डेंजरस और हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ. Now moving on to the fourth question. Which state has recently announced formation of GAO cabinet for cow production? Cow protection के लिए किसने अभी GAO cabinet announce किया है? So it is very simple, right? So the correct answer is Madhya Pradesh. So Madhya Pradesh government has decided to constitute a GAO cabinet for cattle conservation and promotion. इसमें क्या क्या होगा? एनिमल हस्बेंड्री, फार्मर्स वेलफेयर, पंचायत, रूरल डेवलपमेंट, होम एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स आएंगे. और जो फर्स्ट मीटिंग है इट विल बी हेल्ड इन द काउंट सैंक्चुरी इन आगरा मालवा डिस्ट्रिक्ट ऑन गोपास्थमी फेस्टिवल ऑन November 22. ठीक है. सो जस्ट गेट द बेसिक आइडिया ऑफ दिस गाँव कैबिनेट, राइट.
Then lastly, the fifth question is, which of the following statements regarding convergence project are correct? These projects are planned to be set up all over the country to ramp up the brownfield projects. The first convergence project will be set up in Goa. Commerce Ministry is the implementing agency for convergence projects. So you can pause the video here and read the statements again and mark your answer. So the correct answer is 2 only, because only the second statement is correct. कमर्स मिनिस्ट्री की जगह मिनिस्ट्री ऑफ पावर होना चाहिए. एंड कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट्स आर नॉट दीज. व्हाट आर कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट्स? कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट क्या है? they seek to connect seemingly independent sectors like solar energy storage and LED lights to provide solutions which can help in decarbonization and affordable energy access. ठीक है. So that is what is the objective of convergence project. So the idea is to generate green energy for rural and agricultural consumption by connecting these sectors. पहला जो है वो गोवा में आएगा और बेसिकली EESL, a joint venture of PSUs under the Ministry of Power and Goa government have signed a memorandum of understanding for the same. So what is the mechanism? देखो, it is offering convergent interventions which will solve gap areas in the energy ecosystem. So you will have solarized agriculture feeders, LED street lights, battery energy storage system. ठीक है. एंड कार्बन फाइनेंसिंग मैकेनिज्म को बेसिकली लीवरेज किया जा रहा है ताकि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन सके. ठीक है. अभी अगर हम EESL के और इनिशिएटिव्स देखें, सो वी हैव ग्राम उजाला, डिसेंट्रलाइज सोलर एंड ग्राम पंचायत स्ट्रीट लाइट प्रोग्राम्स. ठीक है. तो ऑलरेडी उनके चल रहे हैं. दे आर जस्ट ट्राइंग टू कन्वर्ज इट ताकि जो एनर्जी एक्सेस है वो अफोर्डेबल हो जाए और ग्रीन एनर्जी मिले बेसिकली इन द रूरल एरियाज. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स? ऑब्वियसली रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, स्पेशली फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल पावर कंजम्पशन. Then they are energy efficient because they will have energy efficient pumping and lighting. Then they will improve the health of discoms. ठीक है. So they will ensure कि savings हो. Right. Then check technical losses. Now they will provide clean daytime electricity to farmers and energy efficient pump sets which would reduce the power consumption as well as T&D losses associated with transmitting power to agriculture and rural feeder networks. ठीक है. So these are the benefits कि एक तो renewable energy को promote कर रहे हैं and that too in an energy efficient way. देन डिस्कॉम्स को हेल्प करेंगे, देन टेक्निकल लॉसेस को प्रिवेंट करेंगे. सो ओवरऑल इट इज़ गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन. सो दीज आर योर 5 क्वेश्चंस ऑफ प्रीमिक्स. टू मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट्स बिलो. और अगर कोई डाउट है आपको किसी भी क्वेश्चन या किसी भी स्टेटमेंट से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.